फर्स्ट अब लोग आपकी मोबाइल पे काइनमास्टर एंड्रॉयड ऐप्स को ओपन कर लो। नेक्स्ट अब लोग प्लस ऑप्शन में क्लिक करके 16:9 रेशियो का एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लो। अभी मीडिया ऑप्शन पे जाके आप लोग जिस वीडियो के ऊपर रिवील टेक्स्ट इफेक्ट को ऐड करना चाहते हो वो वीडियो को इंपोर्ट कर लो। आप लोग देख सकते हो मैं एक वीडियो को इंपोर्ट कर लिया एंड इस वीडियो के ऊपर ही मैं एडिटिंग करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट आप जिस फ्रेम से टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो वो फ्रेम पे जाके टेक्स्ट को ऐड करो। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद आप लोग लेयर ऑप्शन पे जाके हैंड राइटिंग ऑप्शन से एक सॉलिड ग्रीन कलर की लेयर ऐड कर लो। Symphony, and you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name, or you say her name, yeah. My love, it grows with the memories, like a symphony, and you and I, we got history, yeah. Wherever love goes, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. अभी मीडिया पे जाके एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लो एंड उसके बाद हमारा जो मेन वीडियो लेयर है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जो मेन वीडियो लेयर है उसकी जगह पे ब्लैक लेयर आ जाएगा एंड लास्ट में इस ब्लैक लेयर की कलर को चेंज करके ग्रीन कलर कर दो। आप इस वीडियो को आपके डिवाइस में एक्सपोर्ट कर लो। नेक्स्ट फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करो एंड उसके बाद हमारा जो मेन वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लो। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. इंपोर्ट हो जाने के बाद अभी जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो हम लोग एक्सपोर्ट किया उसको भी इंपोर्ट कर लो। एज ए लेयर इंपोर्ट करो एंड उसके बाद उसको फुल स्क्रीन कर दो। नेक्स्ट क्रोमा की ऑप्शन पे जाके उसको ऑन कर दो एंड क्रोमा की ऑप्शन ऑन करने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। It's so beautiful, you and me. We
meant to be in the great सो फ्रेंड्स, outdoors. आप लोग देख सकते हो हमारा जो एडिटिंग है ये फुल्ली कंप्लीट हो गया एंड जो इफेक्ट है ये फुल्ली काम कर रहा है। सो ऐसे काइनमास्टर की न्यू वीडियो एडिटिंग टिप्स देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। Sometimes you need to go